Fifth class, our first lesson in Hindi, Mool Mantra. What is the meaning of the Mool Mantra? Mool means main, the mantra means the portion. Okay? Now, let us read the poem. केवल मन के चाह से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है पूरी मंजिल यहाँ किसी की। केवल मन के चाह से ही मनचाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है पूरी मंजिल यहाँ किसी की। मनचाही मीन्स मन में इच्छा, मन मीन्स हार्ट, इच्छा मीन्स द विश, something we want to do or we wish to do. If we think in the heart, we can't achieve the thing. To achieve the thing, we should do hard work. Okay? पर्वत की चोटी छूने को पर्वत चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। पर्वत मीन्स द माउंटेन, चोटी मीन्स द top of the mountain or the peak of the mountain. To reach the top of the mountain, what we should do? We should climb the mountain. Without climbing the mountain, we can't reach the top of the mountain. Okay? सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। सागर means the ocean. Moti, the pearls which are there inside the ocean. Now, to get the pearls from inside the ocean, we should go inside the water. We should search for the pearls. Then only we can get the pearls. To climb the mountain and to search the pearls. Without doing hard work, these are the two hard tasks. Without doing hard work, we can't get the result of it. उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। उद्यम मीन्स परिश्रम और हार्ड वर्क। चींटी, you know चींटी means the ant. The ant will be small, but it also needs a house to live. Okay? Now, some other person will not build and give the house to the ant. It should do hard work to build its own house. Now, the ant is doing hard work to build its own house. The ant is a small animal. उद्यम किए बिना न सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। सिंह is means the lion. शिकार means hunting. Why the lion will do hunting? Because it needs food to eat. Okay? Even the lion, the wild animals, what they will do? They will hunt the small animals, kill them and eat them. Okay? उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती। उद्यम किए बिना न सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। Even it is a small animal, the small ant or the lion, both they should do hard work
The ant should do hard work to build it house or to get food, and the lion should do hard work to get its food. इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम. इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम. If we want to achieve anything in our life, we should do hard work. Without doing hard work, we can't achieve anything. In our life, we will not get anything easily. Okay? Because let us take a small example. Now you are in the 5th class. Now you are able to read the words and the sentences. How it was possible for you? From the childhood, think from the 1st class, from the UKG, you are learning the letters and alphabets. You have learned the words. Now, when you have come to the 5th class, it is easy for you to read the words. Okay? Like that only, you were doing the hard work from the childhood. Now, what is the result? You are able to read the words. Okay, students? प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम. परिश्रम means the same, hard work. In our life, we should do hard work. Then we can attain anything. The students, what is their duty? The students, to attain good marks, we should do hard work in all the subjects. Okay? Now we will read one more time. केवल मन के चाह से ही मनचाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है पूरी मंजिल यहाँ किसी की. पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है. उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती. उद्यम किए बिना न सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता. इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम.